wobbling or wobble hypothesis or wobble mechanism that was proposed by Crick in 1966 to explain the degeneracy of genetic code. Degeneracy means that more than one codon for one amino acid. Total 64 codons are present while the number of amino acids are 20. तो एक ही अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन प्रेजेंट होते हैं जो उसको कोड करते हैं फॉर द ट्रांसलेशन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्रिक ने वॉबल हाइपोथेसिस प्रपोज किया था। ट्रांसफर आरएनए uses the wobble mechanism in which the transfer RNA can recognize more than one codons including degenerate codon। यानी वोबल मैकेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र आरएनए एक से ज़्यादा कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है टू रेगुलेट द ट्रांसलेशन प्रोसेस। Wobble pairing, according to this hypothesis, only the first two bases of the codon have a precise pairing with the bases of the anticodon of transfer RNA। यानी सिर्फ जो कोडॉन के फर्स्ट टू बेसिस हैं वो एंटीकोडॉन के फर्स्ट टू बेसिस के साथ पेयरिंग बनाता है, while the third base of codon wobble with the third base of anticodon। जबकि थर्ड बेस जो है कोडॉन इन एंटीकोडॉन का वो वोबल पेयरिंग बनाएगा। कोडॉन मीन्स 3 nucleotide sequence in which the first two bases can pair with the first two bases of the anticodon, while the third base of codon and anticodon will make wobble pairing. For example, this is the transfer RNA 3 nucleotide sequence that is called anticodon. For example, guanine, adenine and guanine. And this is the messenger RNA where codon is present for this anticodon, that is cytosine, uracil and cytosine. This is the normal pairing between the anticodon and the codon. 1, 2 and 3 represent 3 base pairs from the 5' end, and 1, 2, 3 represents 3 base pairs from the 5' end. So, an wobble pairing here, instead of cytosine that pairs with the guanine, here the uracil will pair with guanine. This pairing is called wobble pairing. And wobble pairing, the first base at the 5' end of the transfer RNA will make wobble with the third base pair of the messenger RNA। यानी नॉर्मली हमारे पास गवानीन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग बनाता है, जबकि वोबल पेयरिंग में गवानीन जो है इंस्टेड ऑफ साइटोसिन यूरेसिल के साथ भी पेयरिंग बना सकता है। यानी जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसके 5' एंड पे जो फर्स्ट बेस है वो मैसेंजर आरएनए के थर्ड बेस के साथ पेयर बनाएगा। दिस इज़ वोबल पेयरिंग। टाइप्स ऑफ वोबल पेयरिंग, 3 types of wobble pairing are present. They are uracil of transfer RNA can pair with adenine or guanine of codon. Normally, uracil can pair with the adenine, while in wobble pairing it can make pair with the guanine.
The guanine pairs with uracil or cytosine. Normally, the guanine of the codon can pair with the cytosine of the anticodon, or the guanine of the anticodon may pair with the cytosine of the codon, while the wobble pairing it can also pair with the uracil. Look here, that is the normal pairing between guanine and cytosine, and this is the wobble pairing of guanine with the uracil instead of cytosine. Third type is the inosine pairs with adenine or uracil or cytosine. Inosine is commonly found in transfer RNA and is essential for proper translation of genetic code and wobble pair. Normally, 4 nucleotides are present in the transfer RNA, that are uracil, adenine, guanine, and cytosine, while in wobble pairing here another nucleotide, that is inosine, is also present, with just only use in the wobble pairing. यानी वोबल पेयरिंग में 3 टाइप्स हमारे पास हैं, जिसमें जो एंटी कोडॉन हैं ट्रांसफ़र आरएनए का, उसका यूरेसिल गवानीन के साथ भी बना सकता है, एडेनिन के साथ भी. नॉर्मली यूरेसिल जो है वो एडेनिन के साथ पेयर बनाता है, जबकि वोबल पेयरिंग में गवानीन के साथ भी ये बना सकता है. इसी तरह गवानीन जो है एंटी कोडॉन्स का नॉर्मली वो साइटोसिन के साथ बनाता है, लेकिन वोबल पेयर में ये यूरेसिल के साथ भी पेयरिंग बना सकता है. इस तरह आइनोसिन ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है जो कि ट्रांसलेशन को प्रोसीड करता है ड्यूरिंग द वोबल पेयरिंग. तो ये या तो एडेनिन के साथ बनाएगा, या फिर यूरेसिल के साथ, या फिर साइटोसिन के साथ. So the wobble pairing or wobble hypothesis or wobbling or wobble mechanism, which is used to explain the degeneracy of genetic code, and this mechanism is used by the transfer RNA to recognize more than one codons.